Good morning and a very warm welcome to all our viewers on Doordarshan Sports as we bring you this morning live show Sports Cafe. I'm your host Arjun and joining me in the studio is our eminent sports expert and senior sports journalist Shri Rupinder Singh. Rupinder, a very warm welcome to you on the program. Thank you so much, Arjun, and what a day to look forward to. India, Australia, Bengaluru, Bopanna playing a final, and of course, if Nadal plays Kyrgios now next after his victory over Djokovic, mouth-watering day of sporting action. Indeed, a mouth-watering day of sporting action with action from tennis, shooting, cricket and badminton. Let's look at the headlines first. Rohan Bopanna, Marcin Matkowski enter double semi-finals in the Dubai Tennis Championship. Angad Veer Singh, Haley win bronze in the mixed team skeet event in ISSF shooting. On a Turner, Virat Kohli looks for a turnaround in the second test match at Chinnaswamy Stadium in Bengaluru. An Indian campaign comes to an end with the loss of Kidambi Srikanth at the German Open Badminton. Well, the first action is in tennis with Rohan Bopanna and his partner Marcin Matkowski, who have entered the doubles semi-final. There's also plenty of other action with the disappointment with Djokovic losing to Nick Kyrgios and Andy Murray advancing in the Dubai Tennis Championship. So, Rupinder, looking at the doubles action right now, how do you see them now in the semi-finals, and do you see them winning the finals as well? Well, it's a tough ask. They await the winners of the other semi-final, and both those pairs are very good. But what was interesting was yesterday's match from Indian viewpoint, Bopanna up against Leander Paes, and what a match it was. It was a thriller all the way till the final set when Bopanna and Matkowski prevailed over Paes and partner. So, well done Bopanna, and justifying the fact that why was he not selected for the Davis Cup tie ahead of Paes, if not with Paes. So always that ITA controversy finding its way into the international arena. The big disappointment, of course, being that Novak Djokovic lost to Kyrgios. We saw Roger Federer losing out before as well. So that has been a big disappointment. Let's now look at the press coverage related to tennis. Bopanna gets timing right. That's the coverage in the Mail today. Bopanna Matkowski pair in the title round. Times of India. Indian Express, Bopanna Matkowski reach finals in Dubai. दैनिक जागरण, बोपन्ना और मार्सिन की जोड़ी फाइनल में. हिंदुस्तान, पेस को हराकर बोपन्ना ने फाइनल में जगह बनाई. अमर उजाला, पेस का हराकर बोपन्ना दुबई ओपन टेनिस के युगल फाइनल में. दैनिक भास्कर, same semi-final in which Bopanna defeated the pair of Leander Paes. So looking at the coverage in the Dubai Open, we're talking about Novak Djokovic losing out. Roger Federer had lost as well. So how do you view these developments when it comes to men's tennis? Well, from the Indian viewpoint, great success for Bopanna. Again, an emphasis on the fact that he deserves to be selected. And there's another match coming up against Uzbekistan where Denis Istomin is one of the opponents on the team who beat Djokovic in the Australian Open. And it's going to be an interesting affair. Coming back to the singles, yes, what a tournament. So good for Bopanna to be in the final of an event in which Federer was knocked out early and Murray just survived against a 37-year-old veteran, Philipp Kohlschreiber, a 31-minute tiebreaker in order to reach the final. So early days for the big four. And Djokovic, since his losses after the French Open when he realized his ambition, is not mentally as strong, and the youngster Nick Kyrgios getting the better of him. He had a dream day, 25 aces he served. Kyrgios is a man who physically has it all but mentally has to develop from that
rebellious youngster into a mature player. जो अगला ग्रैंड स्लैम इवेंट होगा वो होगा फ्रेंच ओपन, जो क्ले कोर्ट इवेंट है। तो आपको लगता है कि ये जो हार्ड कोर्ट से क्ले कोर्ट का जो ट्रांजिशन है वो एंडी मरे जैसे प्लेयर्स वो सफल होंगे? सबके लिए अब प्रॉब्लम है क्योंकि नडाल बहुत अच्छा खेल रहा है। तो एंडी मरे, हाँ, उन्होंने दिखाया है पिछले साल कि वो अच्छे करें। प्रॉब्लम थी जोकोविच की। जोकोविच को सडनली रियलाइज हुआ कि नडाल इतना अच्छा खेल गया ऑस्ट्रेलियन ओपन में, मेरा कॉन्फिडेंस लो है। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, वाइल्ड कार्ड लेके मेक्सिको गए और वो क्रिगियोस से हार गए। उनको यही लग रहा है कि क्ले सीजन से पहले, क्योंकि आखिर पिछले साल के रेनिंग चैंपियन फ्रेंच ओपन के जोकोविच है, और उनको डर लग रहा था कि नडाल मेरे से आगे ना बढ़ जाए। और मेक्सिको में एंटर करके उल्टा हुआ, वो तो हार गया और नडाल आज सुबह सेमीफाइनल जीते हैं बहुत अच्छा चिलिक के अगेंस्ट। और अगर क्रिगियोस के साथ मैच होगा, अगेन एक माउथ वाटरिंग मैच होगा ये मेक्सिको को। Well, next up is shooting, where Angad Veer Singh and his co-partner have won the mixed team skeet event with a bronze medal in the ISSF Championship that is being held at the Dr. Karni Singh Stadium in Tughlakabad, Delhi. So let's look at the press coverage for shooting. Hindustan Times: failure to nurture talent hurts India. Coach Deshpande. दैनिक जागरण: इंडो अमेरिकी जोड़ी को तीसरा स्थान, ब्रॉन्ज मेडल वन बाय अंगद वीर सिंह एंड हेली इन द मिक्स्ड टीम स्कीट इवेंट। हिंदुस्तान: अंगद ने हेली के साथ कांस्य जीता। दिस इज अ शूटिंग विश्व कप ऑर्गेनाइज्ड बाय ISSF। अमर उजाला: अंगद वीर को मिक्स स्कीट इवेंट में कांस्य पदक। दैनिक भास्कर: अंगद ने हेली के साथ जीता ब्रॉन्ज मेडल। Well, a lovely pictorial of the bronze medal winners there, Rupinder. Apart from this success in the mixed team skeet event by Angad Veer Singh and Haley, there's also the observation by Deshpande that not enough is being done by NRAI to nurture the talent at the junior level. Would you agree with that? Well, let's put it into perspective. Some of the positives: India's performance coming on the back of a disappointment at Rio, very encouraging. Best ever performance at World Cup, but a World Cup is not an Olympics. That is something we have to be careful about. Angad Veer Singh winning a bronze, actually speaking, he partnered a US partner, and in fact the two Indian pairs were beaten by them, and these are demonstration events, so let's not read too much into that. What Deshpande has observed is the truth about Indian sport. The talent is enormous, and although I am not a shooter and I haven't gone into depth in it, but I can judge from my sport, the young talent is not looked after. And I read that article. Coach Deshpande's view is that shooting is a tough ask. To get a weapon is a tough ask. To get ammunition is a जो tough ask. licensing terms and conditions Exactly. बहुत strict हैं, importing the weapon, the ammunition and then Correct. access to a shooting range, वो अपने लिए एक challenge है। Yes. तो ये सब चीजें, प्लस फिर जो टैलेंट दिखता भी है उसको नर्चर करके, डेवलप करके, एक प्रोफेशनली जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, वो हर एक स्पोर्ट में इंडिया में मिसिंग है। पैसे पे बहुत एम्फोसिस है, आप क्रिकेट को ही देख लीजिए, प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। पिच बनाने में तुम्हारा एक लोकल क्यूरेटर, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो। अगर हम शूटिंग की बात करें तो यहाँ पे कुछ ब्रॉडकास्टिंग चैलेंजेस हैं, क्योंकि इट मे नॉट बी टीवी फ्रेंडली, बट अब एट द ग्लोबल लेवल जो हमने रियो में देखा है उसको टीवी फ्रेंडली बना के रखने। स्कीट इवेंट्स आर क्वाइट टीवी फ्रेंडली एज वेल। तो आपको लगता है कि यहाँ पे जैसे ही टीवी फ्रेंडली बनता है तो स्पॉन्सरशिप भी आ जाएगा और पैसा आ जाएगा? बिल्कुल, ये इन्वेस्ट करना होगा। सारे फेडरेशंस को इंडिया में ये सीखना होगा। क्रिकेट आज क्यों कमा रहा है? क्योंकि इन्होंने प्राइवेट चैनल्स पे अलाउ किया, और प्राइवेट चैनल्स का बिडिंग वॉर से मेन पैसा आता है। और अभी दूसरे स्पोर्ट्स इतने वैल्यूबल नहीं है, बट यू राइटली पॉइंटेड आउट, उनको वैल्यूबल बनाना है थ्रू टीवी। तुम 100 कैमरा लगाओ, इतना इंटरेस्टिंग करो, जैसे आपने बोला रियो में दिखाया, इंडिया में क्यों नहीं दिखाया? तो ये डेफिनेटली दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। सारे स्पोर्ट्स को हेविली इन्वेस्ट करना चाहिए अपने स्पोर्ट को टीवी फ्रेंडली कराने से, क्योंकि टीवी पे अगर स्पोर्ट होगा
तो वो स्पोर्ट पैसे कमाएगा। आज विराट कोहली के पास $100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, सरदार सिंह के पास नहीं है, दीपक कर्माकर के पास नहीं है, क्योंकि वो खेल टीवी पे नहीं आते हैं। Well, let's not forget that where the private channels fail, Doordarshan Sports is always there to cover all sporting events. Next up is on cricket with the Bengaluru Test match, which is going to be underway, the second Test match after India lost the first very poor performance from India against the counterparts Australia. Let's look at the press coverage there. Mail today. Revenge on mind. Virat Kohli, the captain of the Indian team, would be looking to come back strongly in the second Test match at Bengaluru. Will it be a turner? Times of India. Smarting India look to get even. And there's also observation by many Australian players that they should be careful. India striking back. Hindustan Times. India to go full stretch at Bengaluru. Indian Express. On a turn-up, Kohli looks for turnaround. दैनिक जागरण, टीम इंडिया को चढ़ना होगा उम्मीदों का पहाड़. Plenty of hope as far as the Indian team is concerned. Will they be able to make the turnaround? हिंदुस्तान, बेंगलुरु में बराबरी के लिए जंग आज से. अमर उजाला, अब चिन्नस्वामी स्टेडियम के पिच पर निगाहें. Anil Kumble has been quite taken aback by the number of questions by journalists regarding the pitch and its preparation. दैनिक भास्कर, कोहली पर सीरीज बराबरी का दबाव. Plenty of pressure as far as the home test matches are concerned, and Virat Kohli certainly feeling it right now. Rupinder, the Bengaluru test match again. If it's a turner, will it be to India's advantage this time round? Because India had lost the first test match in Pune quite convincingly within 3 days. So even though Anil Kumble says they mustn't talk too much about the pitch, this is what they do. What did they do at Pune? They turned it around into a square turner. The first ball turned squarely. So who did that? The Indian authorities are responsible. And behind the Indian authorities finally is the management. And therefore they are more concerned about the state of the pitch than they're playing. They have to execute on the ground. That is the most important thing. And having learned from there, they will still go for a Chinnaswamy pitch which is not bouncy and pacey. They will ensure that is out of the picture. They will go for a pitch which is a batting pitch. They will hope to win the toss, put on good runs when the batting conditions are good, and then get their spinners into action in the second and third day. तो आपने बात की कि अगर ये फ्लैट विकेट रहता है तो हमारे बैटिंग के लिए बेहतर है. They will post a big total and then set a target for the opposition. Correct. हमारे ओपनिंग पेयर में काफी मुश्किलें आई हैं, तो किस तरह से कोच अनिल कुंबले और जो बैटिंग कोच है संजय बांगर इसको टैकल करेंगे? क्या वो तो कह रहे हैं कि हम 19 टेस्ट जीते हैं, हम अनबीटन हैं, हम हमारा पुराना क्लास रिकॉर्ड है, हमारा क्लास है और हमारा क्लास फाइनली टेल करेगा. ये एक एबरेशन है. बट I need to remind them, they will have to execute it there in the record says, when they were winning all these matches, no one questioned the opening, no one questioned their fielding. They continue to say they are better fielding side, and that was an aberration. So what about the bowling? आपको लगता है कि 5 bowling strategy or 4 bowling strategy? Bowling also, let's analyze what happened at Pune. The pitch was a turner. We who have the world's best number 1 and 2 bowlers, Ashwin and Jadeja, they could not think through what the pitch is doing and what they need to do. Old man, Stephen O'Keefe, who's only played 4 tests before this, with his consultant after the lunch break, went through and decided we need to bowl straight, we don't need to spin, and look at the result. So if your world number 1 and 2 bowler cannot figure this out, this is what I think the problem of Indian cricket is. They only go with a plan A. They have no B's and C's and D's to think during a match. And they only count a match after they've lost the match. They can't develop from first innings to second innings. What was stopping them to give an improved performance in second innings? It's pathetic display by them. And that is the attitude which hurts and which will hurt in the long run.
Let's look at day one today of the second test match, how India come back into this test series against Australia. Next up is badminton, where Kidambi Srikanth lost to Chen Long in the pre-quarter final. Let's look at the press coverage for that. Srikanth goes down fighting times of India. A strong 47-minute contest where he lost 19-21, 20-22. In the Sun Times, Srikanth bows out of the German Open. Indian Express, Srikanth fight ends in agony at the German Open. Chen Long, the opponent, defeating him in straight games. दैनिक जागरण तीसरे दौर में हारे किदाम्बी श्रीकांत in straight games 19-21, 20-22 to Chen Long. हिंदुस्तान, श्रीकांत जर्मन ओपन के प्री क्वार्टर में हारकर बाहर. दैनिक भास्कर, चेन से हारे श्रीकांत, भारत की चुनौती खत्म. Plenty of hopes on Kidambi Srikanth, but Chen Long too strong for him, defeating him in straight games. Rupinder, I think we discussed this yesterday as well, but once again the Chinese dominance clear even in the men's singles. Not dominance, actually this is a very good coverage. See, Srikanth lost, but they're giving him credit because of the manner in which he fought. That's supposed to the gap between the points in the two games. That's supposed to how India lost in cricket. So, well done Srikanth. 1921, 2022 is creditable performance against a world and Olympic champion Chen Long. And that is a very creditable performance. So we are not talking about winning and losing as the only criteria. Although our cricket team seems to think the media is after them. एक और बेनिफिट ये कि जो आपके BWF रैंकिंग्स में आप जितना प्रदर्शन करेंगे बेहतर तो आपके पॉइंट्स जुड़ जाते हैं और जो ऑपोजिशन है आप इतने स्ट्रांग ऑपोजिशन को अर्ली राउंड्स में मीट नहीं करते हैं तो कहीं आपको लगता है कि मेन सिंगल्स में इसका फायदा हुआ है? हाँ, डेफिनेटली श्रीकांत इज ट्राइंग टू डू दैट. बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ क्योंकि बहुत जल्दी ही उनको चेन लॉन्ग से खेलना पड़ा और इतने बड़े खिलाड़ी से जल्दी, और ये इसी कारण है क्योंकि उनकी रैंकिंग पुअर हो गई थी. तो ही इज वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड इट्स अ वेरी गुड एफर्ट. Well, next up is Srikanth, who's filed a writ petition before the Kerala High Court to lift the ban that has been imposed by the BCCI, the lifetime ban against playing cricket. So let's look at the press coverage on that. Mail today, the Kerala High Court has issued a notice to BCCI on the writ petition filed by Srikanth on the lifetime ban imposed by BCCI. Times of India, High Court notice to BCCI in the Srikanth case that includes also allowing Srikanth to play in the Scottish Premier League, an NOC required for that. Hindustan Times, Kerala Court acts on Srikanth's ban plea. A notice has been issued to the BCCI for their reply. An appearance. Hindustan, Srikanth की याचिका पर BCCI को नोटिस. अमर उजाला, Srikanth की याचिका पर बोर्ड को नोटिस. दैनिक भास्कर, केरल एक्सप्रेस, Srikanth की याचिका पर मिला BCCI को नोटिस. So notice has been issued to the BCCI regarding Srikanth writ petition. Briefly, this is obviously a sub judice matter, but a lifetime ban. Do you see him at least get an NOC for playing in the Scottish Premier League? Well, it's stupid on the part of BCCI. When the court has cleared him and there's no law in the country which will ban him, they should have immediately lifted the ban. And why stop a player from playing when there is no case against him? And to delay this, you know better. Delaying of justice is denying of justice, and this is purely a case of that. Well, that's the end of the story segment. Let's look at the next segment, which is the fitness segment with Ramneesh Vats, who is a yoga expert. नमस्कार, आपका योग के कार्यक्रम में स्वागत है. स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर पूर्वक, सुख पूर्वक, शांत पूर्वक जो आसन किया जाता है उसे हम आसन कहते हैं. आज इस योग की कड़ी में हमने योग के माध्यम से दमा का निदान करेंगे. दमा, जैसा कि आप जानते हैं,
एक गंभीर बीमारी है, एक गंभीर समस्या है। आज इस योग की कड़ी में हमने 2 आसन लिए हैं। पहला आसन है पूर्णोष्ट्रासन और दूसरा आसन है भूनमन आसन। उष्ट्रासन मतलब ऊंट के समान। जब हम इस आसन को करने जाते हैं तो हमारे शरीर की आकृति ऊंट की भांति हो जाती है। इस आसन को करने के पहले दमा के बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। दमा एक सांस की बीमारी है। जब भी हम सांस लेते हैं तो वह सांस नाक के माध्यम से ब्रोंकाइल ट्यूब तक जाती है। ब्रोंकाइल ट्यूब के सिरों पर एल्वियोलाई व वायु कोष्ठ होती है जो कि रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है और CO2 को बाहर निकालता है। लेकिन दमा के कारण जो हमारी ब्रोंकाइल ट्यूब के सिरा जो है उसके ऊपर जो मसल्स है उसको वह सिकुड़ जाती है, जिसके वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। इसीलिए हमने आज योग में 2 आसन लिए हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था, पहला आसन है पूर्णोष्ट्रासन और दूसरा आसन है भूनमन आसन। इन दोनों आसनों के माध्यम से हम दमा जैसी गंभीर समस्या, गंभीर बीमारी का हम निदान करेंगे। आइए देखते हैं पूर्णोष्ट्रासन। पूर्णोष्ट्रासन में सबसे पहले हम घुटने के बल बैठ जाते हैं, वज्रासन जिसे हम कहते हैं। वज्रासन की स्थिति में बैठने के बाद दोनों हाथों को एक साथ फैलाते हुए, आगे की ओर फैलाते हुए, टखने को पीछे दोनों हाथों को ले जाते हुए पकड़ते हैं। इसके बाद हम अपने जो सर का भाग है, जो गला है, गर्दन है, उसको हम पीछे की ओर लेके चले जाते हैं। सांस को, लंबी गहरी सांस को खींचते हुए इस स्थिति में 30 सेकंड से 45 सेकंड तक रुकने का प्रयास करते हैं। उसके बाद इस आसन में हम थोड़ा और पूर्णता लाते हैं, जिसे हम पूर्णोष्ट्रासन कहते हैं। पूर्णोष्ट्रासन में थोड़ा कठिन है, लेकिन युवा वर्ग इसे जरूर कर सकते हैं और इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आइए इसकी भी थोड़ी विधि जान लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम अपने दोनों घुटनों को, अपने दोनों हाथों से अपने घुटने को पकड़ते हैं। घुटने के पास ले जा करके हमारे जो सर का भाग है वो पैर से चिपक जाता है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो मसल्स है, हमारी जो डायफ्राम है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन होता है। वो ज़्यादा एक्सपैंड ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि हमारी छाती का फैलाव होता है। हमारी छाती का फैलाव होने की वजह से हमारे डायफ्राम का नरिशमेंट होता है। फेफड़े का नरिशमेंट होने की वजह से हमारी लंग्स कैपेसिटी इंप्रूव होती है और लंग्स कैपेसिटी इंप्रूव होने की वजह से क्या होता है, हमें लंबी गहरी सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है और दमा जैसी गंभीर समस्या का हम निदान पूर्णोष्ट्रासन के माध्यम से देखते हैं। लेकिन सावधानी है। सावधानी किन्हें है? यदि किसी को पीठ, पेट व कमर में गहरी तकलीफ हो या वह उच्च रक्तचाप से पीड़ित हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, तो वह ना करें। सामान्य अवस्था में यह आसन भरपूर लाभ देता है, जिसे हम पूर्णोष्ट्रासन और उष्ट्रासन कहते हैं। पूर्णोष्ट्रासन में एक बात का और मैं ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं। जब आपने देखा कि पीछे की ओर हम ले जाते हैं तो हमारे थायराइड ग्लैंड का भी मसाज होता है। थायराइड ग्लैंड का मसाज होने के साथ साथ हमारे पीठ और कमर का भी लचीलापन बढ़ता है। वह लचीलापन हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हुए हमारे शरीर में ऊर्जावान, मतलब हमारे शरीर में एनर्जी का विस्तार होता है, जिससे हम अपने शरीर को पूरे दिन तन कर चल सकते हैं। यह हमने लाभ, विधि, सावधानी और लाभ जाना पूर्णोष्ट्रासन के माध्यम से। अब हम दूसरे आसन में चलते हैं। वह आसन है भूनमन आसन। भूनमन आसन में सबसे पहले इसमें हम
हनुमानासन में दोनों पैरों को एक साथ फैलाते हुए जाते हैं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को एक साथ पैरों को फैलाते हुए आगे की ओर झुकने का प्रयास करते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए हम आगे की ओर झुकते हैं। इसमें हमारी छाती का फैलाव हो रहा है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हम क्या देख रहे हैं कि हमारी छाती का फैलाव हो रहा है। हमारी जो मसल्स थी, जो हमारी ब्रोंकाइल ट्यूब थी या वायु कोष्ठ है, जिसका फैलाव होने में दिक्कतें पैदा हो रही थी इस प्रदूषण के माध्यम से, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो हमारे खान पान ही हो। खान पान में भी हम इस बात का ध्यान केंद्रित कराना चाहते हैं कि हमारे जो आज का खान पान है और हमारी जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जिसे हम अकर्मण्य जीवन शैली कहते हैं, वह भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। वो स्थमा का, जिसे हम दमा कहते हैं। भ्रू नमन आसन में हमने क्या देखा? हमारी छाती का फैलाव होता है। डायफ्राम जब फेफड़ा का फैलाव हो रहा है तो हम लंबी गहरी सांस बिना किसी रुकावट के लेते हैं, और जब हम बिना किसी रुकावट के ले रहे हैं तो फ्लो ऑफ द ब्रेथ विल बी मोर चैनलाइज। जब उसका प्रॉपर चैनलाइज हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारी सांस की जो बीमारी थी, जो सांस लेने में हमें तकलीफ थी, वह तकलीफ दूर हो जाती है। तो इस आसन को आप नियमित रूप से करें। पूर्ण उष्ट्रासन और भ्रू नमनासन बहुत ही लाभदायक आसन माना जाता है दमा की बीमारी के लिए। हम आशा करते हैं आप इन दोनों आसनों के माध्यम से भरपूर लाभ उठाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। Well, that was Ramneesh Vats, Yogacharya, on our fitness program. The benefits of improving your lung performance, the intake of breath that leads to a healthier lifestyle. Would you agree? Yes, I think so. These natural methods are better than medication. Medication always has side effects which causes troubles to other parts, whether they improve asthma. In the case of yoga, no side effects, wonderful performances. Well, let's now move on to our next segment, Aaj Ka Din. Well, today in 1967, Daryl Cullinan, the South African batsman, was born. He had a test record of 70 test matches, 4,554 runs and 138 ODIs. He scored 3,860 runs, also called the Shane Warne Bunny. And now we have the next segment, Aaj Ka Special. On Aaj Ka Special, we have the second test match between India and Australia being played at Bengaluru, day 1. And next up is a La Liga, where Real Madrid has an exciting match in the Spanish League. Well, it's time now for us to thank our guest expert, Shri Rupinder Singh, for being with us on our morning live show, Sports Cafe. Thank you so much for being with us. Thank you, Arjun. It's also time for us to thank our viewers for participating and watching this program. Do join us on our social media websites and give us your views on Sports Cafe. Do connect with us on Facebook, Twitter, YouTube and Instagram. Well, do join us again next week, same time at 9 o'clock in the morning on Sports Cafe. Till then, it's Namaskar and goodbye from us.